Yeah, Vijay, are you able to hear me? So, Yeah. So, I selected in the previous link. I selected this particular thing. Let me check one more thing. Yeah, I selected this, and then I said right click, and I said set as default. Okay. Now, whenever insert a new object, okay, any object, be it say this balloon type, okay, if I select this, I'll still end up getting an orange color, and there will be no outline. You can see over here. Weight में जाके देखेंगे कुछ भी selected नहीं है. It is by default selecting as no outline, and it is showing me with the orange color. Now, if I'm using these objects constantly in my PPT, doesn't it save some time for me where I'm not depending on the default color, okay, and I'm using those colors which are part of my theme, consistency over here, and it saves me a lot of time, and nobody certainly, can think कि मैंने कस्टमाइज नहीं किया. मैंने कस्टमाइज किया है. डिफॉल्ट तो ब्लू होता है, मैंने ऑरेंज कलर का यूज करके किया है, राइट? certainly, sir. Okay, so that is the tip for being a bit efficient in your way. So please remember these things. This is the control shift alt option. Shift option will always bring your object to the correct size which you want. Control object will expand your object from the center itself. Alt object will give you option to move this object to anywhere where you want, irrespective of whatever lines and everything. And then once you select that place, you can then delete the original object. Okay, this is, and you can use them in combo. हाँ, मतलब आप control shift तो हमेशा हम लोग use करते हैं. You can also use alt and you can play along with it wherever location you want. Then we went to the image object and we saw three important concepts. अभी ये ऐसा नहीं है कि outline is only defined for the image object. You also saw the outline is defined for the shape format also. So image object हो या shape object हो, ये तीन important चीजें हैं: outline, gradient, transparency. This is how you can play along with the way the effects of your PPT, and you can control them correctly on this. Okay. Any doubts on this so far, Vijanti? No, sir. कुछ नहीं, right? You had your tea, or you are still going to have it? मतलब No, आपको, sir. I'm going to have it. Not yet. okay, आपको टी ब्रेक लेना होगा तो मुझे प्लीज बता देना. Sure, sir. आप ओके. कभी टी ब्रेक लोगे तभी बताइए, सर. मेरा टी तो साथ साथ में चलता रहता है. आई एम एडिक्टेड टू टी, so otherwise अच्छा, my अच्छा. brain will not work. Is it? Oh, Yeah. my husband is like that. Yeah, I've now trimmed down from normal tea to green tea, more Okay. into मतलब being a picking up a healthy drink. That's it. But जो चाय में जो मजा है वो किसी में नहीं है. सर हम लोग को बचपन से आदत नहीं था चाय का, लेकिन शादी के बाद एक चाय पीती हूँ. तो Okay. that and plus now a month back I started some intermittent fasting, so it's today I've taken a leave from it, so I'm having two meals. That's true. Okay. All right. Okay, sir. Let's move ahead. This is the format shape, control shift alt. अब हम लोग एक quickly देखते हैं. There is a very beautiful tool which saves you a lot of time. Okay. ये Excel में भी होता है, ये documents में भी करके देते हैं, and also it works in PPT. So no matter whichever office object are you using, office application you are using, this tool is the most powerful tool. Okay, it saves you a lot of time. अभी मैं आपको quickly बताता हूँ कैसा मुझे ये time help कर रहा है. Now here say somebody created this PPT for you. Okay, this slide was created by someone. You're told by your boss ki boss, Vajanti, I want you to create a similar looking theme. Okay, similar looking theme like what you is present over here. But
दिस इंफॉर्मेशन शुड बी डिफरेंट, लाइक ये जो टेक्स्ट लिखा है ये अलग है, प्रॉब्ली ये ऑब्जेक्ट भी आप अलग बना के दो, ये शेप भी अलग करके दो, लेकिन कलर ऐसे ही होना चाहिए, लुक एंड फील ऐसे ही होना चाहिए. सो व्हाट यू डू इज, सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे. You will go, say insert, okay. I have an object, say triangle for example. अब मैं जब इसको ट्राइंगल को क्लिक करूंगा तो आपको क्या लगता है कि कौन सा कलर का ट्राइंगल बनेगा? What do you think? ऑरेंज। Correct. ऑरेंज। That's like my good student. तो आपको पता है ये ऑरेंज कलर, बिकॉज आई हैड सेट दिस एज अ डिफॉल्ट, राइट. या। अब मुझे इस ऑरेंज कलर से इस कलर के फॉर्मेट में आना है. आई वांट दिस काइंड ऑफ लुक एंड फील टू बी अप्लाइड टू माय ऑब्जेक्ट ओवर हियर. ओके. ओके। सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट शॉर्टकट आइडिया, आपको क्या लगता है क्या होएगा? Sir, one is you can, I don't know whether you can duplicate or cut paste the same stuff. ये तो मुझे पता था, आई न्यू इट. somebody will definitely say कि ये इसको कॉपी करो, पेस्ट करो और डाल दो, खत्म करो. राइट और रॉन्ग? Yeah. हाँ. मोस्ट ऑफ क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ वर्क्स ऑन दिस, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी इज द मोस्ट यूज्ड शॉर्टकट इन द कॉर्पोरेट लाइफ, फॉर श्योर. और बड़े बड़े लोगों ने अपने अपने करियर बनाया है, सच्ची बोलता हूँ. इट्स नॉट ओनली दिस, आई वुड से इवन इन द फिल्म इंडस्ट्री, इवन इन एनीथिंग, जस्ट कॉपी पेस्ट होता है सब कुछ. दे जस्ट कॉपी वन पर्टिकुलर थिंग एंड दे डू इट. ओके. Another alternative for copy paste is you can make a similar looking theme. You can select the object which you want to work on. Okay. Say I want to work on this particular object. मुझे ऐसा ही shape इस triangle में चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ home में जाऊंगा. After selecting the object, I'll go to home, या I will go to home and I select this object. Okay. ये अंदर का object. You can see एक तो बाहर का rectangle है. If I just click once, I am selecting only the outer frame. Okay. But if I click again, I'm selecting the inner frame, which is the object itself. Getting my point? So you have to double click. Yes, double click. आप भी कर सकते हो. आप डबल क्लिक करोगे तो आपको हाँ. दो फ्रेम दिखेगा इधर. ओके, दो दो व्हाइट डॉट्स एंड एवरीथिंग ये सब दिखेगा, राइट. Yeah. Hmm. अब मैं क्या करूंगा, the moment I double click on it, you will see this format painter option getting on. Right. ये एक्टिवेट होता है. मैं इसको क्लिक करूंगा और मैं जाके सीधा अपने ट्रायंगल पे क्लिक करूंगा Okay. एंड सी द मैजिक. आपको दिखा क्या हुआ है? Nice, sir. The square is the triangle is in a rectangular form now. सॉरी सॉरी, मैं समझा नहीं, आपने क्या बोला? Triangle is seen in now in the rectangular form. नो नो नो, द ट्राइंगल इज हैविंग व्हाट कलर? That it's come ट्रांसपेरेंसी. in the color of yellow, the same color. Yeah, same color. Now the thing Yeah. is, what I was trying to make you point is, आपने अभी पिछले स्लाइड में देखा कि ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कितना मेहनत करना पड़ा मुझे. Okay, then हाँ. you saw the gradient thing, you saw this outlining the frames and everything, right? इतना मेहनत Right. मेरे को एक एक ऑब्जेक्ट पे करना पड़ा. उससे अच्छा मैं एक ऑब्जेक्ट ऐसा करूंगा जो जिसके अंदर मुझे मेहनत करना पड़े. इफ आई वांट टू रेप्लिकेट दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर अदर्स, ऑल आई हैव टू डू इज, इसका देखो, ये फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका ट्रांसपेरेंसी इज 50%, कलर इज ऑन येलो, राइट. इसको अगर मैं Yeah. ग्रेडियंट करूंगा तो अलग ही कलर आएगा इसका. तो all these things, I don't need to repeatedly go and create a new object and do transparency. उसका भी 50% करो, उसका भी कलर सेम एग्जैक्टली सेम रखो. ओके, ये कलर इसका यहाँ पे है भी नहीं. आई नीड टू गो एंड क्लिक ऑन मोर कलर्स. वहां पे जाके दिखता है मुझे अंडर कस्टम्स की 255 200 एंड 0. I'll tell you what exactly it is. पर ये एक कोड है. This is a code using which the system is able to understand that this is probably a yellow color. Okay. तो ये सब मुझे करना ना पड़े, तो मैंने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को सिर्फ सिलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर पे गया और उसको जाके क्लिक कर दिया. तो मुझे सेम
look and feel यहाँ पे भी दिखे. If I click on this object, even here you can see the transparency is 50% and the color is the same color which I was talking to you about. Uh, this one, 255, 210. Getting my Okay. point? So Yes, sir. another way to be efficient is not to just replicate objects, but to just uh, format painter use करो उसको. That's the best way to deal with this particular situation. Okay. Okay. Yeah. Any confusion with regards to I'll format just painter? try one, sir. I'll हाँ just करो try करो. one. एक बार ट्राई कर लो आप. Yes, sir. Done. हो रहा है आपको भी? You're Yes. getting the same? Yes, sir. Great. Now Now for what happens to the text inside? टेक्स्ट भी आपको सेम फॉर्मेट में दिखेगा. ये जो दिख रहा है ना आपको, जैसा ये टेक्स्ट है, एग्जैक्टली अगर आप जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे आपको सेम दिखेगा उधर. You want to see that? Let me type something in this. If I go to edit, if I say Hermeet, oh no no, ये टेक्स्ट का अलग नहीं, है. ये पूरा टेक्स्ट वैसे ही कॉपी नहीं होगा, ऐसे बोल रहे हैं नहीं आप? नहीं, टेक्स्ट कॉपी नहीं होगा. इट्स ओनली द लुक एंड फील ऑफ द ऑब्जेक्ट विल गेट कॉपीड ओवर देयर. ओके, ओके, ओके. बाकी आपको खुद ही करना पड़ेगा. मतलब ये जो टेक्स्ट है ये प्रॉब्लली आपको कॉपी करके यहाँ पे लेके आना पड़ेगा. पर ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी आपका ये इंफॉर्मेशन है, दैट इज गेटिंग कैप्चर्ड करेक्टली ओवर हियर. नो इश्यूज. There you should not be facing any issues with that. So if I go here and if I say Control V, I'll get the same feel, but मेरा format यहाँ पे थोड़ा high है. So it seems to be like this. Steps to healthy lifestyle and everything. Okay. ओके. All right. So ये एक चीज हो गया. Now another small thing which I wanted to make you understand is, have you worked on animations in या your, आई हैव. you have, right? या. Okay. Now I just inserted a new slide. How did I do this? I just दो slides के बीच में जो जगह होता है वहां पे आप जाके ऐसा राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड कर सकते हो. Or else you can go into this on the top in the home tab. There is this new slide. आप कोई भी स्लाइड सिलेक्ट करो. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फिफ्थ वाला स्लाइड सिलेक्ट किया और मैंने फिर न्यू स्लाइड को क्लिक किया. तो फिफ्थ के बाद मुझे इमिडिएटली सिक्स स्लाइड ऐसे न्यू स्लाइड आ गया. ओके. करेक्ट. न्यू स्लाइड तो आने के सर, बाद, ये दो स्लाइड के बीच में क्लिक करने का वो नहीं पता था हमको, हम ऊपर ही जाके क्लिक करते थे न्यू नहीं स्लाइड. नहीं, you can do it. There are multiple ways of doing it. आप सेक्शन ऐड कर सकते हो, आप स्लाइड ऐड कर सकते हो, एनीथिंग whatever you want. ओके. अभी ओके. आपने ये जो किया ना, ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपको एक टेम्पलेट देता है. ओके. दिस इज लाइक अ हम्म. टाइटल ऑन द टॉप एंड देन द बॉडी. एंड द बॉडी यू कैन हैव एनीथिंग व्हाट यू वांट. ओके. तो मेरे को ये हम्म. नहीं चाहिए. मैं क्या करूंगा, मैं इसको राइट क्लिक करके आई विल गो इनटू लेआउट and I will say I want a blank layout. I don't want any default layout over here. So the moment I click राइट. on blank, everything gets cleared. कुछ नहीं आएगा आपके सामने. करेक्ट. राइट. ओके. अभी क्या होगा, अब मुझे एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट करना था. से फॉर एग्जांपल I created this shape object over here. Okay. In this shape object I'm writing uh, Yash Raj presence um, DDLJ. Okay. Now this हम्म. is a small information which I'm sharing over here. मैंने इसको बहुत बड़ा कर दिया है इसको टेक्स्ट बॉक्स का, तो let me just trim it down. So this is Yashraj present DDLJ. Now if I want to add animations to it, okay, हम्म. अगर मुझे कोई एनिमेशन करना है तो मेरे पास बहुत सारे एनिमेशन के फॉर्मेट हैं यहाँ पे. यू कैन सी ओवर हियर देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. एंट्रेंस की एंट्री कैसा होगा उसका. देन देयर इज हम्म. एम्फेसिस. अगर कोई चीज पे एम्फेसाइज करना है तो उसका होगा. अगर कोई एग्जिट मार रहा हूँ मैं,
if I'm making an animation like an exit, so how does exit will happen? If I'm moving from one point to another point, तो वो movements को कैसे capture करेगा? Let's look at any one of them, okay? आपको कौन सा, what is your preferred type? What do you want to experiment over here? ग्रो एंड श्रिंक, एम्फोसिस में. Emphasis में grow and shrink. Okay, let's look at that. See, it's growing. Okay, so इसमें जब भी मैंने इसको animation किया है, okay, when I'm clicking on this, do you see this? This one number wasn't appearing initially. जैसे मैंने नो. animation डाला, the one appeared over here automatically. Did you notice करेक्ट. that? यस. Okay, so one stands for some kind of animation technique over here. अगर जीरो होगा तो इसका मतलब कोई भी एनिमेशन नहीं होता है. अगर आपने वन डाला मतलब आपने कुछ तो एनिमेशन किया है. ग्रो एंड श्रिंक प्रॉब्लम इसका एक कोडिंग स्ट्रक्चर है. विल कवर दिस मोर on this particular thing. Now, when I select this object on which the animation is performed, it's saying it will start on click. मतलब आप माउस से क्लिक करोगे तो आपको स्टार्ट होगा. Duration will be of 2 seconds. You can add a delay if you want, but right now there is no delay added to it. It is all zero as of now. Okay, लेकिन ड्यूरेशन इसका 2 seconds का होगा and it will start with a click. Just give me one moment, huh? Just one moment. Sure. Yeah. Hey Vajanti, I'm sorry. My apologies. Are you able to? Are you still there? Yes, sir. Yeah. So ये animation कर दिया हम लोग ने. Now if I actually go and run this slide, I don't know if I'm sharing right now, so I don't know if this will work. But if I press Shift F5, uh, are you able to see this? आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. You are able to see the presentation view? Yeah. Okay. When I click on this, you can see it's expanding, right? Yeah. वापस करूं कि should I try it again? Yeah, let's try it again. I'm clicking on this now, and you can see it's expanding, it's growing, Yeah. right? Okay. अभी मेरा कॉन्सेप्ट ये था आपको एक्सप्लेन करने का कि अगर मैंने बहुत सारे ऐसे एनिमेशंस करके रखे हैं, okay, if there is any way, any particular way in which I've ordered this animations, so what I can do is uh, say ये मेरा emphasis का था. Means on a single slide, you are saying that two, three animations have included नहीं, on the same object I can include 2 3 animations. I can on do the that. same object. Okay. Yeah, let's try to create some more effect to it. Let's see अगर ये कुछ और हो सकता है तो
तो इसके अंदर फेड आउट नहीं, सॉरी, सेम ऑब्जेक्ट पे एक ही कर सकते हैं आई थिंक. यू कैन नॉट डू मोर देन वन on the same object, but on the same slide you can have multiple objects having different kind of animations show here. Okay, so Correct. ये एक हुआ. तो अभी अगर समझ लो मुझे एक और स्लाइड में ऐसे ही कुछ करना था. ओके, से देयर वाज अनदर स्लाइड. यहाँ पे मैं वापस कंट्रोल एन दबाता हूँ. oops sorry, control n नहीं. If I right click on this and if I say new slide, I get a new slide. If I want uh, यश राज प्रेजेंस की जगह पे अभी मुझे say I want to have insert say this shape. ओके, और यहाँ पे मैं करूँगा कि एडिट टेक्स्ट ऐसे गुरुदत्त प्रेजेंस कागज के फूल. ओके, You are old movie fans, is it? नहीं नहीं, आई जस्ट सॉ यस्टरडे चुप करके कोई मूवी, चुप, द रिवेंज ऑफ एन आर्टिस्ट. It's Oh, it's inspired on this tragedy king Gurudutt. acha. It's On what it is? Netflix. no, it's on G Cinema, I guess. लेकिन आप अगर जियो आपने लिया है जियो फाइबर, तो आपको फ्री में दिख जाता है सब कुछ. So Chup. चुप करके, चुप, द रिवेंज ऑफ एन आर्टिस्ट. Okay. It's a good movie, very good, very uniquely made. Very It's a old movie, is it? Or it's a new नहीं, movie? it's a new movie which was released in September, I guess. अच्छा अच्छा. Yeah, वो OTD पे कल ही आया. So it जी critically सिनेमा के जी. अच्छा जी जी पे जी, है क्या? हाँ जी सिनेमा, मतलब जी का जो ओटीडी प्लेटफॉर्म है, जी, करेक्ट करेक्ट, हाँ उसके हाँ हाँ. ऊपर. या अच्छा. तो ये मैंने ऐसे बना दिया. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, जो इसको जब सिलेक्ट करता हूँ मैं. ओके, देयर वाज एन एनिमेशन thing which I had created to this, right? ये वन का लेबल दिख रहा था, पर यहाँ पे मुझे कोई एनिमेशन नहीं दिख रहा. I have not added any animations to it as of now. So if I want to recreate, से आपने यहाँ पे एक अच्छा एनिमेशन क्रिएट किया हुआ है. Okay, and you want to recreate this animation on this object. Okay, what you can do is you can just go and select this object over here. You can go to home. You can say format painter. Okay, and you can go to the new slide, select this object, boom, done. इसमें अभी आप जाओगे एनिमेशंस के इसके अंदर, तो आपको वो सेम एनिमेशन आपको यहाँ पे दिखना चाहिए. लेट मी run this thing and let me see if it's coming up correctly over here under this. No, it's not happening. I'm sorry. I think I messed out something over here. The point which I'm trying to drive is कि animations जो होते हैं, वो animations के लिए भी आप format painter use कर सकते हैं. You can have uh, animations created for one slide. You can use it for other objects at the same time. Okay, but probably there is a small trick which I may have messed out over here. Maybe I will cover it in the next time when we deal with the animations. But basically मेरा point ये था कि आपने अगर कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें यहाँ पे क्रिएट की हैं, that can also be Don't need replicated to in redo form of, it. yeah, you don't need to redo it. You can just replicate the entire thing over here. So save a lot of time. You can invest once and reuse it multiple times. Okay, Right. so that is one aspect I wanted to explain. Quickly just covering this, ये एक वर्जन से अलग अलग. विंडोज में जब स्टार्ट हुआ था, विंडोज एंड मैक were having a lot of problems, competition earlier when we were having office versions. but जैसा जैसा हम लोग न्यू ईयर की तरफ जा रहे हैं 2019, okay, they both these operating systems are becoming more and more consistent in terms of um providing the updates or providing the features. अब क्या होता है कि कई, I don't know which operating system you use. Do you use Windows or Mac?
use Windows. विंडोज राइट. तो मैक यूजर्स के साथ क्या होता था कि देयर वर लॉट ऑफ फीचर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द विंडोज प्लेटफॉर्म बट वेर नॉट अवेलेबल फॉर द मैक प्लेटफॉर्म. Okay, there was a conflict in a lot of things, especially when it came to PPT. But this was happening in since 2010, 2013, 2011. ये पुराने ये versions अगर आप use करोगे तो आपको conflict दिखेगा Mac और Windows के बीच में. But as we progress towards new and new versions, 2016, 2019, which is currently going on, they seems to be more consistent, more the conflicts have been resolved more or less in both the operating systems. You will see consistent behavior, consistent features which are available for Windows are also available for Mac. Okay, पहला पहला conflict होता था. तो ये एक बताने का था. Now which version you are using, you can always go to files, go to accounts. You can see over here in the office updates में your office product activated मेरा version is Microsoft Office Home and Student 2019. Okay, आपको कौन सा वर्जन होगा वो आप देख सकते हैं. एंड देन यू कैन पोटेंशियली अंडरस्टैंड कि किस तरीके की फीचर्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स यू हैव इन योर वर्जन. यू कैन आल्सो गो टू once again to file, go to accounts, एंड ये जो अपडेट ऑप्शंस होते हैं इनमें आप देख सकते हो व्यू अपडेट्स. तो इसमें आप देख सकते हो कि अभी तक जो भी वर्जन्स हुए हैं आपके सिस्टम पे, so what versions are they? Are you able to see the browser for me or no? Vajanti, are you there? Vajanti, are you there? Vajanti, hello. Yes, sir, I'm very much there. I was just trying to go to the files and see which is my version. Okay, okay, I'm sorry. Uh, so I just wanted to So I have show. a search button down. Where do I go? Uh, Just so go to file. Okay, go to this is file the on the problem top. with the updated version में ये जैसे पहले था वैसे है नहीं, अभी स्क्रीन ऐसा दिखता है कि पूछो मत. आप आपको ऊपर होम के बाजू में फाइल दिख रहा है. सर होम ही नहीं दिखता है ना सीधा. एक ओ, वैजंती और देर इज वन ऑन द राइट हैंड कॉर्नर, देर इज स्लीप शट डाउन रीस्टार्ट, आई कैन सी. लेफ्ट हैंड साइड देर इज माई नेम. no, no, no. On the top in the PPT itself. जो PPT ओपन किया होगा आपने On the उसके अंदर. PPT, okay. Yeah, On the PPT, I can see home. yeah. Click on file next to home. Yeah, and then there is accounts. Yeah, go to accounts. You will see It is here. Microsoft Home and Student 2019. हाँ, मेरी जैसे ही आपका सेम है. तो आप इसका अंदर ऑफिस अपडेट्स में जाओ. ये अपडेट ऑप्शन दिख रहा है आपको नीचे ड्रॉप डाउन. हाँ हाँ. इसमें व्यू अपडेट्स में जाओ. So View updates. yeah, it will हाँ. take you. It will open up a browser, most probably Microsoft Edge browser for you, and it will show you. Microsoft 365. Yeah, it will show you Yeah. what's new in Microsoft 365. So whatever features you have, you can just read it through this, and you can understand कि आपके पास कौन से features अभी है, which you can use in your Microsoft Office. Okay, just Okay. know, मतलब it's just basically for your knowledge. That's it. Okay. Okay, so ये एक चीज हो गया. अब आते हैं हम लोग एक एक अच्छे कूल टिप के पास. There is something called as quick access toolbar. Have you heard about this name? Yeah, in Excel we had. Yeah, सेम चीज पावर पॉइंट पे भी है. तो क्या होता है कि जो people who are more into keyboard, they don't use mouse. For them, this is an excellent feature. So if you press Correct. Alt key on your PPT right now, you will see
all the ribbon tabs are having some letter on that. FHN, दिख रहा है आपको? Yeah. Yeah. अभी उसकी भी ऊपर आपको टॉप में कुछ दिख रहा है, 1 2 3 One, two, 4 three, four. हाँ. those are your quick access toolbars. ओके, आपको जो चीज सबसे इजी लगा, और या फिर कोई ऐसा टूल आपको लगा पूरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर या पीपीटी के अंदर, विच यू रिक्वायर फ्रिक्वेंटली, विच यू यूज फ्रिक्वेंटली, विच यू आर having in your day to day life, you have to use it frequently, तो आप उसको क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ये ट्रेनिंग में वी आर मोस्टली डीलिंग विद शेप ऑब्जेक्ट्स, राइट? यू एग्री विद दैट? Correct. So what I Yeah. can do is I can just right click, I can go to the insert object over here, insert tab. I can right click on shapes and I can say या फिर मैं इसको shapes को क्लिक करूंगा और क्लिक करके इसको राइट क्लिक करके इसको बोल सकता हूँ add to quick access toolbar. Now why is it not highlighting for me? Is because it's already there. मैंने shape object को already यहाँ पर डाल के रखा है. If you see, this is my shape Okay. object over here. Okay. Okay. Are you able to add it to your quick access toolbar? It's I will something just similar try to this. once. आपको ऐसा दिखेगा, देखो शेप Okay, में I'll जाना है. just try. हाँ, शेप में आप आपको राइट क्लिक करना है शेप पे और सिर्फ बोलना है ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार. Um, Alt key and then go to shapes. नहीं, ऑल्ट की नहीं, आपको सिर्फ गो टू इंसर्ट की, इंसर्ट रिबन, गो टू शेप्स हाँ. एंड हाँ. राइट क्लिक ऑन द शेप्स. Yeah, customize the ribbon. Add to quick Add to quick access access toolbar. toolbar. Click on that. हाँ, I clicked. Now there is an option which will come on your quick access toolbar on the top. ओके, वो अभी Yeah. किस पोजीशन पे है ना, वो पोजीशन के बेसिस पे आपको एक नंबरिंग दिया जाएगा उसको. How do you remember that number? You just press alt key and that number Yeah. will appear below that. In my Yeah, case it's it's now alt number 5. 5. Yeah, Yeah, for you number also 5. 5. So I just Yeah. press alt key and then I press 5. The moment I do that, my drop down comes with the shape objects over there. Oh, wow. समझे? तो आपको ये Okay. इजी हो गया. आपको अभी बार बार इंसर्ट टैब में जाने का जरूरत नहीं है. आप सीधा ऑल्ट 5 दबाओ और आपका वो ड्रॉप डाउन आ जाएगा with what shapes you want to work on. Okay. Okay. Sir, one question I had. Now, I am having multiple screens on my screen now. Okay. So, if I have to go from the current one to the Zoom very quickly, I have to minimize everything and then go. What is the easiest way? ऑल्ट टैब दबा सकते हो आप. ऑल्ट Alt टैब, tab. ऑल्ट Okay. टैब दबाओगे तो आपको वो ऑप्शन दिख जाएगा, अलग अलग विंडोज आपके इसमें क्या क्या है. नाउ इन माय केस व्हेन आई प्रेस ऑल्ट टैब आई एम लुकिंग एट, आई कैन टॉगल बिटवीन जूम, पीपीटी, माय ब्राउजर, माय एक्सेल, पीडीएफ. Okay. ओके, तो वो ऑल टैब इज अ बेस्ट वे, या फिर कंट्रोल ऑल टैब होता है और एक कंट्रोल टैब होता है, लेकिन कंट्रोल टैब इज फॉर द सेम एप्लीकेशन. लाइक अगर 5 6 एक्सेल्स खुली हैं तो वो उन एक्सेल के बीच में मुझे नेविगेट करना है तो कंट्रोल टैब इज अ शॉर्टकट की. बट इफ आई वांट टू टॉगल अक्रॉस एप्लीकेशन लाइक एक्सेल से पीपीटी से ब्राउजर, एक्सप्लोरर, देन आई कैन यूज ऑल टैब. सर, बट ऑल टैप करने से मुझे सब स्क्रीन नहीं दिख रहा है. बाहर आके करना है क्या? आप कोई भी एक चीज सिलेक्ट कीजिए. कहाँ पे आप अभी पीपीटी अभी मैं सिलेक्ट करें. अपने पावर पॉइंट के, हाँ, हाँ, पीपीटी के स्क्रीन तो पे. आप प्रेस ऑल्ट एंड देन टैब. So it is showing Zoom, your Zoom on the left hand side, and there is the PPT on. That's all that is on, you mean to say, on my Yeah, screen? I think that's the only two things which are running on your screen right now. No, sir. There on the other browser, like there is on the other email, Google Chrome, there are two other screens open. See, let If me. I can just share my screen one Yeah, second. yeah, sure, sure.
Let me just make it this thing. Yeah, Actually, I want to just rearrange my screens only yeah, because yeah. You can share your screen now. so sir, there is one inbox which has so many accounts here. Can you see my screen? I'm not able to see your Acha, you are screen. not able to see all the screens. Okay, I have shared only one screen. Can you see my current screen? No, no. The अभी तक PowerPoint. एक सेकंड मैं वापस से कहूँ. Okay, I'll share again, I think. नहीं नहीं दिख रहा मुझे अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा था. Can you see now, sir? नो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे. आई कैन. But I have already shared once. यू हैव. आप ओके. मुझे तो दिख रहा है कि मैंने शेयर किया है। एक मिनट, शेयर स्क्रीन। कैन यू सी नाउ? वेट सेकंड. पता नहीं यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है कुछ भी. आई एम नॉट एबल टू सी इट. आई जस्ट गेट दिस. वो जो बाहर आता है ना, म्यूट, स्टार्ट वीडियो, पार्टिसिपेंट, चैट, न्यू शेयर, इतना ही दिख रहा है. उसके उसके आगे कुछ आ नहीं रहा है मुझे. अरे ऐसे कैसे? मैं गेस्ट बॉस. Okay, wait a second. Let me see. Can you? Okay, let me. कैन आई शुड आई स्टॉप शेयर एंड अगेन शेयर इट? हाँ, एक बार वापस करो ना. शेयर स्क्रीन। कैन यू सी सर? No, अभी एक